Hello and welcome everybody students. Today we will discuss about your acquired immunity. Okay, we have already discussed about innate immunity, clear, which includes first line of defense and second line of defense. Now today we will discuss about acquired immunity. Okay, what we will discuss about acquired immunity, which will include your third line of defense. So acquired immunity, acquired immunity. So first of all, what we understand about acquired immunity. What do you mean by acquired immunity? So first of all, its definition will be as follow: the immunity, good minute sir. The immunity or like the type of immunity which is acquired by a person after birth is known as acquired immunity. Yes or no? The immunity which is acquired, which is possessed by the individual after the birth, जन्म हैला परे ए जिनसटा हमको मिले. क्लियर. नेक्स्ट ये रहा हमारा कौन ना डेफिनेशन. हाउ आउ गोटे कथा कहली कौन ना इट कन्स्टिट्यूट्स योर थर्ड लाइन ऑफ डिफेन्स. फास्ट दुईटा डिफेन्स रहा तुम इनेट इम्यूनिटी भितर. आउ इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी. कौन कहली? इट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी. मतलब इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. मतलब innate immunity में कही ये innate immunity will act against every type of pathogen or every type of foreign agents according to its power, but acquired immunity will be function specifically against pathogen. समझ ना? मन कर किसी गोटे भाइरस आसला इन्फ्लुएंजा भाइरस, तो से इन्फ्लुएंजा भाइरस एग्नेस्ट रो काम करियो. पार्टिकुलरली जो भाइरस आसियो स्पेसिफिक तारी एग्नेस्ट रो एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करिए. बुझिपाल ना? तापाई से डिफेन्स सिस्टम प्रिपेयर करियो बा एंटीबॉडी तैयारी करियो कि टी सेल कि बी सेल तैयारी करियो हला. तो सबू प्रकार पाथोजन मैंने डिफरेंट पाथोजन अच्छा. सो डिफरेंट पाथोजन डिफरेंट टाइप अच्छी. तो या गोटे स्पेशल टाइप ए भाइरस गोटे स्पेशल टाइप ये बैक्टेरिया गोटे स्पेशल टाइप डिफेन्स सिस्टम बा एंटीबॉडी से तैयारी करने पाखर क्षमता रखी. सो इट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट pathogens and their toxins. समझ में पाथोजेन आउ टॉक्सिन अगेंस्ट रे माने स्पेशलाइज्ड ऊपर फंक्शन करिवे. आ प्रथम कथा है एक्वायर्ड इम्यूनिटीटा
जन्म पर तो होची किंतु एक्वायर्ड इम्यूनिटी इंटेंसिटीटा आरंभ एत रिगरस न था बा तुम कह पार इट इज नॉट मोर इंटेंस इन इट्स प्राइमरी और इन इट्स फास्ट एक्सपोजर टू एंटीजन जिते बड़े आम बॉडी फास्ट टाइम पे एक्सपोज हम गोटे कौन एंटीजन की बैक्टेरिया कि कौन पैथोजेन को तो आम बॉडी को सी एंट्री कर क्या क्रॉस करना फास्ट लाइन डिफेन्स सिस्टम को क्रॉस कर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स को क्रॉस करके जो आम बॉडी भितर पहुँच तो सेठी तार क्या सहित फेस अप हम ना थर्ड लाइन ऑफ डिफेन्स सहित फेस अप हम तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेन्स जो मैंने रही आम सोल्जर सब रही आम बॉडी रे है तो से आम बॉडी जो इम्यूनिटी रहा थर्ड लाइन ऑफ डिफेन्स जो इम्यूनिटी सिस्टम आम बॉडी भितर अच्छी तो सी जो प्रथम थर सी एंट्री कर गोटे नुआ बैक्टेरिया कि भाइरस ताकू सी कौन कर अटाक कर एग्नेस्ट एक्शन नब तार जो इंटेंसिटीटा रही फास्ट एक्सपोजर पर जो सी रेस्पॉन्स रेस्पॉन्ड कर पैथोजेन को बा बैक्टेरिया को तो से प्रथम रेस्पॉन्सटा इज नॉट मोर इंटेंस बुझिपार ना एत इंटेंस हम ना एटा हूँ कहते प्राइमरी रिएक्शन है किंतु से बैक्टेरिया जोटा जहाँ एग्नेस्ट से ऑलरेडी थरे रिएक्शन कर सारी प्रथम थर जोटा कि आम प्राइमरी रिएक्शन कहते जोटा कि मोर इंटेंस नथिला अधिक माने कौन कह अधिक भयानक नथिला माने कोई एत हल्का की रेस्पॉन्सटा थिला किंतु सही बैक्टेरिया की भाइरस इफ दैट बैक्टेरिया और पैथोजेन विल एंटर योर बॉडी फॉर सेकेंड टाइम but in second time the body will oppose that or body will react to that pathogen to that specific pathogen with more intensity or more strength or more power समझ में आएगा ना that will be the second reaction बा second time जोड़ा से second action कोई परिवो secondary response कोई परिवो हला तो से विषय रे बुझी गला कौन हैला तो जो प्राइमरी रिएक्शन है माने व्हेन बॉडी एक्सपोज्ड टू पैथोजेन फॉर फर्स्ट टाइम जितेबाला आम बॉडी प्रथम थर पाई कौन सी बैक्टेरिया भाइरस को एक्सपोज है आउ से माने आमर फास्ट लाइन ऑफ डिफेन्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स माने जोड़ा इनेट इम्यूनिटी भितर रोचंती ताकू क्रॉस करके आम बॉडी भितर एंट्री करिगला तो सेते बेले व्हेन बॉडी एक्सपोज टू पैथोजेन फॉर फर्स्ट टाइम माने से माने ऑलरेडी पास करिथिबे कार फास्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेन्स को पास करिकी जतले आम बॉडी भितर को से एंट्री करिए बा आम बॉडी एक्सपोज होबो तो सेते प्रथम थर पाई तो फास्ट टाइम तांको एग्नेस्ट आम बॉडी जो इम्यून सिस्टम रहा जो रेस्पॉन्स दब सेटा को कहब कौन ना प्राइमरी रेस्पॉन्स है व्हेन बॉडी एक्सपोज टू पैथोजेन फॉर फर्स्ट टाइम पैथोजेन रेस्पॉन्स occur by our immune system है आ ये किए काम करियो ना हमर एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला एक्वायर्ड इम्यूनिटी जोटा कहते यही सिस्टम ये काम करियो है यही जो प्राइमरी रेस्पॉन्सटा कहली प्रथम थर पर जो गोटे नुआ बैक्टेरिया के भाइरस एंट्री कला ताकू जो रेस्पॉन्स कला सेटा प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते प्राइमरी रेस्पॉन्स रो इंटेंसिटी इज नॉट विगरस बा रिगर तो इट इज लेस इंटेंस एते इंटेंस नहीं एते स्ट्रॉन्ग एक्शनटा हुए ना फास्ट किंतु व्हेन बॉडी आवर बॉडी इज exposed to the same pathogen है जतबले आम बॉडी से सेम पैथोजेन द्वारा आउ थे सेम पैथोजेन को एक्सपोज हम सेकेंड टाइम व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू द सेम पैथोजेन से समान पैथोजेन को से एक्सपोज होची फॉर सेकेंड टाइम
फास्ट टाइम से इंटेंस रिएक्शन हो नाला बा रेस्पन्सटा मिल नाला से पाथोजेन को किंतु से पाथोजेन जो आउ थे आम बॉडी भर को आसो आम बॉडी से पाथोजेन को एक्सपोज हम सेकेंड टाइम दिस टाइम कौन हम ना यही समय जो इम्यून रेस्पॉन्स हम बॉडी इम्यून सिस्टम आम इम्यूनिटी पावर जो अच्छी आम इम्यून सिस्टम अच्छी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आम गेन कर तो से इम्यून सिस्टम जो से सेकेंड टाइम से पाथोजेन को रिएक्ट कर रेस्पॉन्स कर दैट रेस्पॉन्स विल कॉल्ड एज सेकेंडरी रेस्पॉन्स हम एंड दिस secondary response is very intense, so it is more intense and it will immediately kill the pathogens or any bacteria or virus है तो ये जिते स्पीड रे से मारूला बैक्टेरिया भाइरस को फास्ट रेस्पॉन्स रे तार 10 गुणा स्पीड रे सेकेंड एक्सपोजर बेलू सी काम कर आरंभ कर आसो सागे सागे शूट करदेव मैंने न्यूट्रालाइज करदे. So these are all about of acquired immunity, by introduction of acquired immunity. Now acquired immunity is again divided into two types. You know about it already. I have told you that acquired immunity is divided into two categories, that is active immunity and another one is passive immunity. So it is divided into two types. Also you have written it about it. Active immunity. Write down it, active immunity and another one is passive immunity. Again active immunity is divided into two types, that is cell mediated immunity. Write down all the flowchart because I will erase it as soon as I finish the writing. Cell mediated immunity and humoral immunity. Remember, in innate immunity there was also a cell mediated immunity, but that was phagocytic cell. But here the cell mediated immunity is by the T cells, T lymphocytes. Clear? So this is the difference between cell mediated immunity of acquired immunity and cell mediated immunity of innate immunity. That was of phagocytic cells by phagocytic cell, and this is by T cell. Okay, T lymphocytes. So now we will discuss about one by one, that is cell mediated immunity and humoral immunity. Again acquired immunity, we know it is two types, active and passive. What is active immunity? Active immunity is that type of immunity which is generated inside our body by our immune system. समझ में आएगा ना. आम बॉडी भितर एक्टिव इम्यूनिटी आम बॉडी की थर कौन गोटे बैक्टेरिया कि भाइरस बा पाथोजेन आम बॉडी की एंट्री कला तो आम बॉडी से एक्टिवली रोल प्ले कर एक्टिवली इनवॉल्व हम ता एग्नेस्ट एंटीबॉडी तैयारी कर कि कौन सी डिफेन्स सिस्टम को सेठी एम्प्लॉय करवा ताको न्यूट्रलाइज करने आंटीबॉडी तैयारी करें कि कौन सी फागोसाइटिक सेल को डिप्लॉय करें कि जहाँ भी कर दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी. कारण आम बॉडी से कौन करुँची ना एक्टिवली टेक पार्ट करुँची, एक्टिवली अंशग्रहण करुँची, पार्टिसिपेट करुँची टू न्यूट्रलाइज, टू टैकल, टू हैंडल दैट टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल बा पाथोजेन. समझ में आ गया. एक्टिव इम्यूनिटी कौन. पासिव इम्यूनिटी कौन ना बॉडी एटी छुआ किसी बॉडी किसी रोल ना बॉडी की कौन सी एक्शन नापी पड़ोनी आम बॉडी भितर इम्यून सिस्टम अच्छी जे ताकू किसी फंक्शन करने पड़ोनी जदि किसी बाहर बैक्टेरिया कि भाइरस है. कारण हूँ डायरेक्टली पासिव इम्यूनिटी आम बॉडी को इम्यूनाइज करा जाए, आम बाहर आम इम्यूनाइज कर बॉडी की. कारण आम बॉडी भितर को डायरेक्टली एंटीबॉडी छाड़ी दिया. पासिव इम्यूनिटी कौन है ना द prepared antibody is directly introduced into our body so that our body doesn't need to prepare the antibodies in itself. बुझीपारा ना नहीं. आम बॉडी भितर को एंटीबॉडी एठी पासिव इम्यूनिटी कौन हम एंट्री कर दि जाव. तेणुक आम बॉडी को एंटीबॉडी तैयारी करने आवश्यकता ही पड़ोनी. देखिले आमको वायरल फीवर होती तो तापाई आमर एंटीबॉडी दे दिगला मार्क्स टैबलेट खाईदेल कि पारासिट जर होती जब पारासिटामोल खाईदे डायरेक्ट आम कौन कले आम डायरेक्ट गोटे एंटीबायोटिक की खाऊँगी हाँ ना नहीं. आम बॉडी की दरकार हम कि एंटीबॉडी तैयारी करने कहीं दरकार हम कारण आम बाहर डायरेक्ट मेडिसिन थ्रू खाईदे
जदि कौन भाइरस आम बॉडी भितर एंट्री कला आम ता एग्नेस्ट रे कौन मेडिसिन न खाइले ताहले कौन हम आम बॉडी भितर एंटीबॉडी तैयारी होबो दैट विल बी नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज बॉडी विल पार्टिसिपेट इन प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडी इन इटसेल्फ क्लियर but if we take medicine immediately after the exposure to any pathogen जदि कौन पैथोजेन एंट्री कला आम सांगे सांगे कौन कले मेडिसिन खाईदे ताने आम डायरेक्टली एंटीबायोटिक खाऊँ एंटीबॉडी नौ टू किल दैट भाइरस और बैक्टीरिया समझ में आ गया ना। तो से पैसिव इम्यूनिटी रे बॉडी डजंट नीड टू प्रिपेयर antibody किंतु in active immunity body will participate or actively participate to prepare the antibody to help the T cell T lymphocyte or to employ the T cell. So this is the difference between active immunity and passive immunity. Passive immunity रे already prepared antibody दिया जाए, active immunity रे body को prepare करिया को पड़े. So this is the difference. Again, what is cell mediated and what is humoral immunity. So now we will discuss about cell mediated immunity and humoral immunity. So cell mediated immunity. What is cell mediated immunity? The immunity or the active immunity, the active acquired immunity. Active again acquired immunity नहीं कि एटा होची कोन active पैसिव नहीं पैसिवटा सेठी रहिला एटा एक्टिव प्लस एक्वायर्ड इम्यूनिटी भीतर आसी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओके व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय किए दउचे इम्यूनिटी कहा द्वारा होची व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय टी सेल की सेल टी सेल टी सेल माने टी लिम्फोसाइट कथा कहूँ ये है टी सेल अलग किसी भावन टी लिम्फोसाइट आम डब्ल्यूबीसी पढ़ला बेले मन पड़ू ना नहीं देयर आर टू टाइप्स ग्रानुलोसाइट एंड एग्रानुलोसाइट एग्रानुलोसाइट वाज टू टाइप्स वन इज lymphocyte another is monocyte so that lymphocyte again divided into two types one is T lymphocyte another is B lymphocyte T lymphocyte is also known as T cell B lymphocyte is also known as B cell so this is the difference active and acquired immunity which is provided by T cell is known as a cell mediated immunity is known as cell mediated immunity लिख दबो हला किंतु सेठी जो innate immunity थिला cell mediated immunity that was provided by phagocytic cells macrophages monocyte neutrophils that type of phagocytic cells was deployed in cell mediated immunity of innate immunity but in acquired immunity also cell mediated immunity is there and this is active and acquired immunity and this is provided by T cell T lymphocyte okay so T cell but T lymphocyte is of 4 types टी सेल कहीं कह जानी ना नहीं देख यार जेनेरेशन विषय टे कही दूसरी देख टी सेल कौट तैयारी हुए जानी ना नहीं टी सेल हुए बोन मेरू तैयारी हुए मन रखि टी सेल कथा जो पढ़ुं टी सेल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मेरू तो बोन मेरू पुणी कौटी अच्छी ना बोन मेरू छुआ आमर अच्छा कौन कहल स्टेम सेल बोन मेरू रे सब कौन था स्टेम सेल माने जोटू सेल रो सृष्टि आरंभ हुए जोटा गोटे टोटिपोटेंट सेल जोटार कि क्षमता अच्छी टू प्रोड्यूस लार्ज न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स इट इज नेवर undergoes death a cell death हुए नहीं a body whenever the body will require some any cell that may be your antibodies B cell or T cell or any cell that will be developed from this type of cell or especially blood cells are developed from this cell so stem cell is a totipotent cell it has power to produce a whole tissue or whole organism in itself stem cell तो stem cell कौन अच्छी ना बोन मेरी अच्छी stem cell अच्छी छुआ lymphocyte सब अच्छी stem cell किए तैयारी हुए lymphocyte obviously B lymphocyte भी तैयारी हुए T lymphocyte भी तैयारी हुए मन रखी दो से lymphocyte मन रहा फास्ट ला बोन भितर बोन मेरू रे अच्छी stem cell किए तैयारी है lymphocyte again जदि lymphocyte reach to thymus gland
Okay, if lymphocyte reaches thymus gland for the processing, then it will be converted into T cell, T for thymus. But if this lymphocyte will go to bone marrow again, will bone marrow again, then that will be the B cell. Difference बुझी पारछ ना? ए lymphocyte दी प्रकार अछि हला, तो ए lymphocyte जदी T cell थायराइड ग्लैंड को गला प्रोसेसिंग होबा पाई बा मैच्योरिटी हेबा पाई थायराइड ग्लैंड को गला हला, बा थाइमस ग्लैंड, थायराइड न थाइमस ग्लैंड हला, थाइमस को गला आउ गोटे प्रकार किसी लिम्फोसाइट थे एमाने एगेन पलैबे से बोन मेरू रे तैयारी बोन मेरू के जीवे माने बुझीपार ना नहीं ये थाइमस ग्लैंड रे प्रोसेसिंग हम ये कौन हम थाइमस रे प्रोसेस हम एठी भी बोन मेरू रे से किसी लिम्फोसाइट कौन है प्रोसेस है हला प्रोसेसिंग हम ए थाइमस ग्लैंड रे प्रोसेसिंग हला पर ये कोटारे कन्वर्ट हो जीवो ना टी सेल बा एकु कुआ जीवो लिम्फोसाइट किंतु जेहेतु ए लिम्फोसाइट रा जेहेतु थाइमस ग्लैंड रे प्रोसेसिंग होइचंदी तो ताकू सेति पई टी सेल बा टी लिम्फोसाइट कुआ जाय ए जो ए बोन मेरू जो गले ए लिम्फोसाइट बोन मेरू रे प्रोसेसिंग हेले सेति पई एमान को बी सेल कुआ जाय बी फॉर बोन मेरू रे प्रोसेसिंग हेबे तो बी सेल बा बी लिम्फोसाइट तो बी सेल माने कोन होती बोन मेरू रे तयारी हे कि जदी बोन मेरू रे प्रोसेसिंग हेला मैच्योरेशन हेला तारो ताल सेटा हबो बी सेल बा बी लिम्फोसाइट किंतु बोन मेरू रे तयारी हे कि जदि थाइमस ग्लैंड रे प्रोसेसिंग हेबो थाइमस ग्लैंड रे मैच्योरेशन हेबो दैट सेल्स विल बी नोन एज टी सेल मन रहला ना देखो टी सेल बी सेल समस्ते बोन मेरू तयारी होचन कारण बोन मेरू रे स्टेम सेल अछि बोन मेरू तयारी जदि बोन मेरू तयारी हला परे आरंभ होला छोटटे तयारी हेबो फर्स्ट बोन मेरू प्रोड्यूस होला सेटु तयारी हला परे जदि जो लिम्फोसाइट सेल माने बोन मेरू तयारी हला परे थाइमस ग्लैंड को जिबे तो थाइमस ग्लैंड रे से माने मैच्योर हेबे तापर से माने को कुआ जिवो ना दे दिया जिवो कोन टी सेल टी लिम्फोसाइट कारण से थाइमस ग्लैंड को गले मैच्योरेशन में किंतु जो बोन मेरू सेल से बोन मेरू को ही जिबे कोन भाई टू बी मैच्योर दैट सेल्स विल बी नोन एज बी सेल बा बी लिम्फोसाइट बुझ पाले बोन मेरू तयारी कि बोन मेरू रे मैच्योर होबो एटी बोन मेरू रे तयारी होबो किंतु थाइमस ग्लैंड रे मैच्योर होबो सो इट इज टी सेल एट इज बी सेल अदरवाइज इट इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट इट इज आल्सो नोन एज बी लिम्फोसाइट दिस इज ऑल अबाउट टी सेल एंड बी सेल सो now cell mediated immunity T cell will act or T cell will provide the immunity. T cell is 4 types. One is T helper, okay, out of T killer, okay, out of T suppressor, okay, helper, killer, suppressor, and another one is T memory cell. सो एमान फंक्शन छुआ सेमती भी अलग अलग होइतबो बुझिपाल केते प्रकार टी सेल बा टी लिम्फोसाइट केते प्रकार कहले 4 टाइप इट इज 4 टाइप्स समझ में आ गया तो वन इज टी हेल्पर सेल बा टी हेल्पर लिम्फोसाइट अनदर इज टी किलर लिम्फोसाइट टी सप्रेसर lymphocyte another one is T memory cell. देखो function of T helper cell is to help B cell that is B lymphocyte to produce antibody. So in this cell mediated immunity it has no role. T helper cell the only function is to help the B cell hala to help the B cell that is B lymphocyte to produce antibody. But here T killer, T suppressor and T memory cell will act in this case. T killer cell will kill the pathogen. T killer cell कौन करिवो pathogen जो माने एंट्री करिथिबे ए इम्यूनिटी सिस्टम रे टी किलर सेल से माने डायरेक्टली किल कर दबो बाय यूजिंग लाइसोजाइम एंजाइम ता पाखरे लाइसोजाइम एंजाइम अछि से लाइसोजाइम एंजाइम की यूज करके पैथोजेन बैक्टीरिया वायरस जहाँ आसो ताको से मारी दबो टी किलर सेल
टी सप्रेसर कौन हम ना ये टी किलर सेल आउ टी हेल्पर सेल को एमाने सप्रेस करके रखिए सो दैट एमाने जमी आम बॉडी कौन बॉडी पार्ट को नष्ट करेनि बॉडी अलग सेल मानक एमाने कौन क्षति पहुँचेबे ना तो एम से सब चापिकी रखिदेव आवश्यक अनुसार फ्री हैंड दब किंतु अलग समय सप्रेस कर रखियो सो दैट दे कैन नॉट हाम्पर और दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर ओन बॉडी सेल बाहर सेल को जिते बड़े आसबे से हेल्प करेंगे टी हेल्पर सेल जी जो बाहर कौन एंटीजेन पैथोजेन आसले सी किलर सेल को हेल्प करें जहाँ तक मार कि जो आम कौन बाहर सेल ना बॉडी सेल बॉडी भितर सुरक्षित अच्छी आम बॉडी तो आम ये टी किलर सेल ये खाली मार तार कम तो जो बाहर कौन एंटीजेन कि एंटी पैथोजेन ना ये सब टाइम सप्रेस कर रखिए सो दैट इट डजंट किल आवर ओन बॉडी सेल समझ में आएगा ना ये किलर सेल को और हेल्पर सेल को सप्रेस करी रखियो बाकी जो 3टा सेल रहा टी सप्रेसर से सब कंट्रोल करी रखि चापिक रही जा बेटा ऐसा दरकार ना तोर काम बुझीपार ना जो बाहर आसो मुझे कहीदेवी से तू जाइए मारू कि अलग समय चापिक रखियो सप्रेस करी रखियो कंट्रोल रखियो समझ में आ गया तो तापर आसला टी मेमोरी सेल हूँ ये पाखर 16 GB मेमोरी अच्छी बुझीपार ना नहीं ये सेल जो एंटीजेन आसी बाहर ये रेकग्नाइज कर रखी या मेमोरी भितर वन्स फिट होगा मैंने जो से एंटीजेन आसो से प्रोसेसिंग करते हेनी चिन्हवाई समय वेस्ट करते हेनी डायरेक्ट कह किलर सेल को जा एटा यही आसी पैथोजेन आसी जा मारिदेव से लाइसोजाइम एंजाइम कर डिफरेंस सिस्टम यूज कर तो टी मेमोरी सेल इट हैज मेमोरी पावर टू रेकग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजेन और एनी पैथोजेन व्हिच इज एंटर्ड आवर बॉडी प्रीवियसली बुझीपार ना जो जोड़ा पूर्वर ऑलरेडी एंट्री कर गोटे गोटे समस्त चिन्हिक रखि किए मेमोरी सेल सो दैट जो एक्शन करवा आरंभ हो न्यूट्रालाइज किल कर आरंभ हो से आउ समय नष्ट होब ना कारण ये चिन्हिक रखी नचे जब गोटे नुआ आसो तो से प्रोब्लेम हम से रेकग्नाइज कर प्रोपर्टी की जान केमिकल प्रोपर्टी कौन अच्छी सी आम बॉडी की क्षति करुच्ची कौटू आसी कौन आसी तार नेचर कौन तो सब रेकग्नाइज कर आइडेंटिफिकेशन ले फास्ट थर टाइम लगे कि सेकेंड टाइम जो सी आसो ताकू आमको आउ माने न्यूट्रालाइज करने आम बॉडी अटैक किल करने डिस्ट्रॉय करने टाइम लगे कारण आम बॉडी मेमोरी सेल अच्छी ब्लड रे है टी मेमोरी सेल तो से ऑलरेडी चिन्हिक रखि थे डायरेक्ट से ऑर्डर देवे हेल्पर सेल को कि किलर सेल को कि आम बी सेल जो रहा go and shoot that pathogen immediately. So this is all about cell mediated immunity, and in next class we hope I will discuss about humoral immunity, that is antibody mediated immunity. So this is very interesting chapter. You have to concentrate whatever I have told you, and also it will be very good if you write down all the things they are taken note during watching the video. So thank you for all.